हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हमने जो केस लिया है वो एक छोटा सा पैराग्राफ है और उसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस डिफरेंट क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 8 की दूसरी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। The rule of law which says that everyone is equal before the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the Constitution. Clear? Now let's discuss question answers based on this. First question is, what does the rule of law says? Options are everyone is equal before law, or no one can be discriminated on the basis of class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. That is, everyone is equal before law as well as no one is discriminated on any basis. Clear? Next question is, every citizen is guaranteed a dash by the constitution if accused. Options are fair trial or public support or success. Answer is fair trial. That is, every citizen is guaranteed a fair trial by the constitution if accused. Next question is, for a trial to be fair, options are accused is punished or several different procedures have to be observed or complaint should not be filed. Answer is several different procedures have to be observed. There are many stages, many procedures that have to be observed before punishing the accused so that he could get fair chance to present himself or herself. Clear? Next question is, although the police filed a case against accused, yet judge assumed, options are accused innocent or accused guilty or accused punishable. Answer is accused innocent. Means judge consider the accused person as innocent and listens the trial carefully and give judgment on the basis of the evidences presented in the court. Otherwise, an innocent person can be punished without any reason. That is why the judge should be unbiased, should listen to the case unbiasedly. क्लियर? दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।